Hello everyone, welcome back to the Tax Table with C and Anni. And today's topic is something which is extremely relevant for the finance professionals, newly qualified CAs, businesses, entrepreneurs, and even for CA students. But they oftenly get misunderstood. And the topic is risk consulting and the internal audit. And to have this entire topic clear to us in a very simplified way, we have with us CA Apoor Mathur sir, who has been dealing in risk consulting engagements and internal audit from last 15 years. Welcome to our show, sir. We are very pleased to have you on board. Thank you so much, Nandini. It is my pleasure to have it with you here. And I'm very delightful to share what all experiences that I have gained in this particular domain with you. Thank you so much. Thank you so much, sir. And if we now start, my first question to you is that we have seen this word risk consulting in our big four um, job descriptions and corporate governance discussions. Also, we listen to those words risk consulting and internal audit. But I want to understand from you that what is risk consulting and in which scenarios organizations need to have a risk consulting and what benefits they get after having a risk consulting from an expert too. Right. It's a very valid question, Nandini. So I'll give this particular answer to this question in a manner so that everyone can understand. Now, what is risk consulting? So first we have to understand that risk consulting is a part of business consulting. So we are acting as a doctor to the businesses. Okay. Now a doctor needs to understand that there is a body. Okay. Within that body there are brain is there. You have stomach. You have eyes. You have ears. Your neck and everything. But overall body is the overall business. In which we have to do the consulting. Now what happens as a chartered accountant? I'm saying so. As a chartered accountant, we can be a tax consultant, we can be a statutory auditor, okay, we can be a income tax expert, okay, advising clients, we can be an investment expert advising the client with respect to the fundraising, with respect to the investment activities and all. But overall collectively we have to give consulting to the client in terms of various loopholes in the processes, what are the avenues in which a business has to work upon to grow. So that ultimately is a role of a risk consultant. So we are acting not as an auditor but as a consultant to the business. So now if I talk about if someone is working as a risk consultant and what should be the key areas a risk consultant should be vigilant about, because we know there are many areas like finance, operations, compliance, technology. So what are the main areas a risk consultant should always keep an eye on to provide a fruitful report, or you can say a suggestions to your client or the company? Again, a valid question, Nandi. So now again to reply to this particular question, I'll take an example of a car, okay, so that everyone can correlate and can understand. Now we can assume that a car is a business, okay. Now if a car drives on the road, so are there any risks? If I'm a driver, I'm driving a car, and say on a busy road, mid of the city, we are driving a car. So are there any risks to me or maybe to my car? So the answer will be yes. Now what can be those risks? First, there will be a lot of traffic chaos will be there. So we have to be very vigilant while we are driving. Second, we are not sure that if someone is jumping the red light and we are going in the green light, so we have to be vigilant that time also. Even though it's a green light for us, but some other person can be jumping the red light. Okay, so that person can come in front of us. Third, there can be potholes. Like it's very common in India. Maybe in the rainy season we'll find across the country. Okay. Then second, there will be some speed breakers. We have to be vigilant that when we have to apply our brakes. Okay. Now, so when we are acting as a risk consultant to the businesses, so we have to vigilant about the business risk also. To what are those business risks? We have to understand that. First, we all are aware that a lot of geopolitical tensions are happening across the globe. So some or the other business are having either imports or either exports. They have some customers outside the country. They must be importing from some or the other country. Everyone knows that there are any change in the policy decision, maybe in United States, maybe in UK, maybe in Australia, will impact the business in Jaipur, in Ahmedabad, or in Kolkata, or in Karnataka. There is a policy decision made by the President of United States and it is impacting our business. So we have to be vigilant about that. Next,
we all know that GST was a reform here in India, right? It impacted every business. Okay. Next, there is a major reform in labor laws. We all are aware of that labor codes have been implemented in India. So the labor law codes have actually what they did. They have repealed all the traditional labor laws that we had in India, and they have come out with a new labor code only into 4 acts. So again, a major transformation in labor tax and reforms. So that is also, as a risk consultant, we have to be vigilant upon. Then everyone is talking about AI. So now, as a risk consultant or as an internal auditor, we are going in a company. So company expects that you should be an expert in AI. Let us know that what should I do, or how we can utilize this technology to enhance my business or to make my business people efficient. So we have to be may not be an expert, but we have to be vigilant that what is the new thing which is coming up in technology. We all are learning about blockchain technology. So we have to be aware about that. Is there any something which we can, consult to our client or give any suggestion to the client with respect to the technological advancements? So this is one thing. Then we all are aware that all startups are running for IPOs in India. There are, what we can say कि IPO की बाहर आई है इंडिया में. Right. अब IPO की बाहर आई है तो आपका बिजनेस जो मैनेजमेंट है, they expects कि मेरा इंटरनल ऑडिटर या मेरा रिस्क कंसल्टेंट मुझे बताएगा that what should I do, what should I not do. Okay, so there are n number of areas which are impacting the business. Okay, and since they are impacting the business, and that impact is a risk. I'm getting my point. So जैसे geopolitical tension होगी तो there is a negative impact in the business. AI आएगा, it is having a negative impact in the business if I'm not adopting that technology. Tax reform हुआ, if I'm not aware about that tax reforms, then it is having a negative impact in the business. So anything which is negative is a risk, and we as a risk consultant have to advise to our business or the clients with respect to the that risk and what are the controls or what are the things that the business has to do. So that is the ultimate role of a risk consultant, and this covers the overall scenario in which we have to work. Sir, in the conversation, we highlighted internal audit as well. Right. Now, there are two terms, risk consulting and internal audit, and I'm a bit confused that are these two terminologies interchangeably be used, or they are different, or we can say internal audit is a part of risk consulting? I need a clarity over it. Sure. Perfectly well put up question, Nandini. So I'll start it with a basic term called as audit. Now, do we know what is audit? Or from where audit word has come out? Do you know how this word originated? No. No. Okay, so let me explain. So it's very interesting that audit word comes from a word called as audire. Audire is a Latin word. Okay, so it's a old age word which is coming from thousands of years before. Now, how did this audit word originated from audire? Audire means what? To listen. Okay. Abhi, everyone must have, I'm sure your audience and you and me, we all have, saw the movie called Jodha Akbar. Yes. उसमें आपने एक सीन देखा होगा where Hrithik Roshan, was Akbar. Yes. Get up change करके जाता है market में, and वो market में just घूमता है. Yes. What he did, he just listened. Yes. वो he saw the things and he listened कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं. So what he was doing, he was actually doing the audit. Okay, and पहले के ज़माने में राजा महाराजा या जो the old age people, they were doing audit like that only. जब कोई बही खाते नहीं होते थे, जब कोई accounts नहीं होता था, so that time audit was done in that manner that people were going across their the territory or the market, and they listened. They saw people and they observed, and they ultimately come back and tell to the management. Management कौन था? राजा महाराजा. कि सर आपकी प्रजा ऐसा कह रही है, आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसे ही जुल्म ढा रहे हैं, ये आपका मार्केट सही नहीं चल रहा. तो दैट वाज ऑडिट, एंड दैट वाज व्हाट? इंटरनल ऑडिट. दैट वाज टिपिकली एन इंटरनल ऑडिट. उसके बेसिस पे राजा महाराजा क्या करता था? दे वर डूइंग इंटरनल कंट्रोल्स कि लो वी हैव टू सेट अप दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, वी हैव टू सेट अप दिस थिंग, यू हैव टू डू दैट थिंग. सो दैट इज व्हाट? दैट इज द इंटरनल कंट्रोल दैट वी हैव टू सेट अप. So from that, internal audit came into existence. Okay. So now internal audit is what? We are, checking or verifying whether the things are going in the right manner. This is internal audit. That means checking. Okay. Checking means what? That we are giving assurance to the business कि हाँ आपके business में सब सही चल रहा है या सब सही नहीं चल रहा है. That's assurance.
अब रिस्क कंसल्टेंट कहाँ से आया, जो आपका क्वेश्चन था? रिस्क कंसल्टिंग इज वी आर गिविंग एडवाइस. सो देर आर टू टर्म्स, वन इज अश्योरेंस, वन इज एडवाइस. अश्योरेंस हुआ कि मैंने एक टिक लगा के दे दिया, येस यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, दैट्स एन अश्योरेंस. बट कंसल्टिंग क्या हुआ? कंसल्टिंग ये हुआ दैट मैंने उनको एडवाइस किया कि इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम देन टेक दिस मेडिसिन, देन यू विल get well. Getting my point? So there is risk consulting activity, there is internal audit. Both are two different terms, but in today's scenario, internal audit is supposed to be a risk consultant. So we cannot, say कि internal audit is a separate activity and risk consulting is a separate activity. Both go hand in hand. But it's a very important thing for us to understand that internal audit is a subset of risk consulting. अब रिस्क कंसल्टिंग क्या है? रिस्क कंसल्टिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है. जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं. ओके, सो दोज ब्रांचेस एंड फ्रूट्स आर वेरियस वर्क दैट वी डू एज अ रिस्क कंसल्टेंट टू आवर क्लाइंट्स. जैसे इंटरनल ऑडिट इज वन सच एक्टिविटी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिव्यू दैट इज वन सच एक्टिविटी, framing of standard operating procedures for our clients, it is one such activity. Okay, doing a forensic audit, it is one such activity. So n number of activities may come which we do for our clients as a risk consultant. Why? Because we should understand कि वो risk क्या है उस business में and how we can guide to our clients to protect against those risks. Okay. So, sir, you have well explained that what is risk consulting, what is internal audits, but I still want to understand why companies do it and what benefits do they accrue. Because as far as my knowledge, internal audit is not mandatory for certain companies. Although this is mandatory for certain high-class companies, but still voluntary for the other companies. Then why should those other companies for which this is a voluntary law for them to have internal audit, but why still also have to have an internal audit in their company? So you mean that the companies who are not mandated by the law? Yes. Okay. So see, I'll take an example. There is, say, father is there in the family. Okay. Now, father has 2 sons. Okay. And son, their friends will come in the house. They'll do some activities कि वो शैतानी करेंगे and all करेंगे, मस्ती करेंगे. Father हर बार अपने बच्चों के साथ नहीं जाता. तो वो शाम को बोलता है, अपने छोटे बेटे को बुलाता है कि एक बार इधर आओ, बताओ आज तुमने क्या क्या काम किया, आज तुमने कितना मस्ती करी, कितनी बड़े वाले को कितना परेशान किया, बड़े वाले ने आपको पीटा, आपके फ्रेंड्स आए, आपने ये करा वो करा. तो क्योंकि फादर कैन नॉट गो एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाई ही हैज अ आईज एंड ईयर्स इन द हाउस. Right. So management sitting at the top, they can't go everywhere. So that's why they need their eyes and ears. Now there are systems and processes that they've implemented in the business. So even if the business is not that big, which is mandated by the law, but the business is say 100 crore companies there, 50 crore companies there, say 10 crore companies there, but the management cannot involved in every operations. Okay, अगर मैनेजमेंट अपने हाथ से ही सब कुछ कर रहा है तब तो ऑडिट की जरूरत ही नहीं है. बट इफ द मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, सो ही नीड्स टू हैव अ पर्सन reliable to him, internal to that business. Internal may not be an employee, but yes, who is not reporting to a statutory body. So that means an intern him. तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है और उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताता है कि देखिए आई कैन नॉट गो एवरीवेयर, सो आई वांट दैट आप फाइनेंस का रिव्यू करें, आप सेल्स का रिव्यू करें, परचेज का रिव्यू करें, प्रोडक्शन इन्वेंट्री आप देखें, मेरा ह्यूमन रिसोर्स देख के मुझे बताएं कि लोग टाइम पे आ रहे हैं, अटेंडेंस प्रॉपर चल रही है, मेरे फाइनेंसिस प्रॉपर है या नहीं है, मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सही है कि नहीं. बिकॉज मैनेजमेंट कैन नॉट गो एवरीवेयर, सो दैट इज वाई मैनेजमेंट हायर्स इंटरनल ऑडिटर टू get the reporting in terms of controls and their effectiveness. Okay. Sir, as the name suggests, internal audit, internal. तो सर ये कंपनी के इंटरनल लोग होते हैं बस, बिकॉज यू आर नॉट एन इंटरनल पर्सन, यू आर डूइंग इंटरनल ऑडिट्स इज कंसल्टिंग फॉर सो मैनी क्लाइंट्स. बट ये इंटरनल ऑडिट एज द लॉ सेज कि इंटरनल ऑडिट के लिए कोई एक्सटर्नल पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल लोग भी कर सकते हैं. तो यानी कि इंडिपेंडेंस भी नहीं आ रही है यहाँ पे, बिकॉज इंटरनल पीपल होंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं होगी, एक्सटर्नल की फिर भी हो सकती है. एंड लॉ भी नहीं बोलता कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फॉर द इंटरनल ऑडिटर. सो माई क्वेश्चन आर टू हियर. फर्स्टली कि क्या इंटरनल लोग इज गुड टू बी इन द इंटरनल ऑडिटर और अ रिस्क कंसल्टेंट, या फिर एक्सटर्नल लोगों से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. एंड सेकेंडली क्या इंडिपेंडेंस भी कोई रोल प्ले करती है क्या?
क्या अगर एज यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, सो उसमें क्या बेटर रिपोर्टिंग होगी आपके एंड से, या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला वेदर यू आर इंडिपेंडेंट और नॉट टू? Okay. So, to give your reply to the first question, पहला, whether the person who is internal, यानी कि an employee of an organization, and there is an external person. Okay. Now, rightly said that internal auditor may not be a employee. That person can be an employee, may not be an employee, and as an external consultant. But क्या होता है, देखिए, कई बात अंदर की बातें अंदर के इंसान को ही पता होती है. द पर्सन हु इज सिटिंग, घर का बेदी लंका ढाए. राइट. तो आप मैनेजमेंट को ऐसा घर का बेदी प्लांट करना पड़ता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी डोंट हैव टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे. बट अगर राम जी की हेल्प नहीं करते, कौन, मे बी रावण के ब्रदर, तो वो कैसे लंका पे जीत हासिल करते? राइट. Getting my point? So management needs those people. Okay. So many a times the person who is internal to the organization knows a lot of things which an external person cannot know, because external consultant कौन है? External consultant वो है जो जिसको एक असाइनमेंट मिलेगा, वो एक एंगेजमेंट लेटर के पे अपना काम करेगा, एंड ही विल प्रेजेंट दैट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट. ओके. बट इंटरनल पर्सन वो है जिसको पता होगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में लूप होल चल रहे हैं, मेरा सेल्स में अभी कुछ गैप्स हैं, मेरे प्रोक्योरमेंट में गैप्स हैं. सो दैट पर्सन मे नॉट बी एबल टू डिलीवर इन दैट इंडिपेंडेंटली, बट यस दैट पर्सन विल हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बेस्ट इंटरनल ऑडिट एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पर देर इज एन इंटरनल ऑडिट टीम विच इज एन इंटरनल टीम ऑफ द कंपनी, एंड देर इज अ एक्सटर्नल कंसल्टेंट. सो दे वर्क जॉइंटली. सो जितना भी ग्लोबली हम मैच्योर्ड इंटरनल ऑडिट का एनवायरनमेंट देखते हैं, सो देयर द टीम इज मेड इन सच अ मैनर दैट देयर आर से 1 or 2 persons from who are the employees of the company, and there is an external consultant like us. Okay. And external consultant are being appointed to do internal audit for some particular function. तो उस फंक्शन में that person gets some information, and that information is passed on to the external auditor. Okay, कि मेरा ये पर्टिकुलर फोकस एरिया है, दिस इज अ डेटा विच वी हैव टू लुक अपॉन, दिस इज द फैक्ट्री विच इज critical for us, so we have to go deep dive all these things. So external consultant then go put throttle to conduct an internal audit. Now coming over to the word independence. So independence, देखिए, internal person की भी तब लूज होती है when that person is reporting to a person who is operational in charge of one particular function. Now one such example can be the person is reporting to CFO. Okay. So now if there is an audit observation related to finance, so will CFO wants कि मेरी गलती को आप मैनेजमेंट को बताइए? Obviously not. तो वो इंडिपेंडेंस लूज हो गई. So independence is not dependent on whether the person is an internal employee or an external consultant. Independence is dependent on to whom that external or internal person is reporting to. So ideally there is an internal audit head. If the company is big enough, if the company is not big enough, then that internal audit report should directly go to the management. So that हमें किसी से डर नहीं है कि मेरा वो अपॉइंटमेंट लेगा, मेरा अपॉइंटमेंट छोड़ेगा, क्योंकि दैट पर्सन इज वी आर नॉट से, जैसे मैंने आपको CFO का एग्जाम्पल दिया. सो मेरा अगर फाइनेंस का पॉइंट आएगा, सो जैसे ही मैं फाइनेंस का पॉइंट टेबल पे रखूंगा एंड आई विल डिस्कस विद दैट CFO, तो CFO बोलेगा कि ओके दिस इज ओके बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट, अपन दूसरी एरिया देखते हैं. या वो स्कोप ही नहीं लिखेगा, वो बोलेगा नहीं फाइनेंस का एरिया हटा दो आप, यू डोंट लुक एट इनकम टैक्स थिंग, यू डोंट लुक एट GST थिंग, we focus on purchase, we focus on sales, we focus on HR, logistics, production, but not finance. Why? Because finance is good. वो तो सब अच्छा चल रहा है, वो तो मैं ही देख रहा हूँ. तो there is no independence there. Right. So it all depends कि हमें रिपोर्ट किसको देनी है. Okay. Very well explained, sir. अब सर अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूं, अभी तक जो मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा उसमें हमने यही देखा कि हम वाउचर्स जाके चेक कर रहे हैं, हमने उनका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हमने जो भी एंट्रीज उन्होंने पास करी है उन्हें चेक कर ली. बट व्हेन आई वाज स्टडिंग द इंटरनल ऑडिट, जो हमारा थ्योरी कोर्स भी था फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था जो कि पर्सनली मैंने कभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फेस नहीं किया. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एक इंटरनल ऑडिट, एक एक्चुअल इंटरनल ऑडिट कैसे कंडक्ट होती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं, एंड हाउ वी कंक्लूड विद आवर रिपोर्टिंग. ओके, वेरी वेल क्वेश्चन. सो इसके भी 2 आंसर्स हैं.
मैं पहले आपको थ्योरेटिकल आंसर देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ. ओके, थ्योरेटिकल आंसर ये है विच वी हैव टू फॉलो. ओके, विच वी मतलब देयर इज अ बाइबल व्हाट वी कॉल एज एन इंटरनल ऑडिट, कि आपको पहले प्लानिंग करनी है. प्लानिंग क्या करनी है कि जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं तो आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया होगा. यू मस्ट हैव रिटन ऑल योर नोट्स, आपने पूरा ग्राउंड वर्क किया, आपने पैनलिस्ट को अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया, आपने पूरा प्लानिंग करी है ना. सो दैट इज अ प्लानिंग. अब प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में देखिए आपने प्लानिंग क्या करी कि वेरी सिंपल एग्जांपल बट आई एम श्योर योर ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि किसको बुलाना है, कौन सा टॉपिक रखना है, क्या बोलना है, मेरे क्वेश्चंस क्या होंगे, वेन्यू क्या रखना है, कितनी बजे पहुंचना है, कितनी बजे खत्म करना है, ऑल दीज थिंग्स. राइट. सो इंटरनल ऑडिट में भी ऐसा है. सो प्लानिंग प्लानिंग इज व्हाट, मेरा स्कोपिंग क्या होगा, कि क्या मुझे व्हाट आर द मेजर रिस्क एरियाज मेरे, इफ आई एम इनटू प्रोडक्शन, सो मेरा सप्लाई चेन, मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, माय प्रोडक्शन मैनेजमेंट, factory operations, statutory compliance. Okay, what are the scope areas per se? Okay, now this planning is done at the very beginning. That means कि when we are preparing the audit calendar for the entire year, so that time the company makes that scope of work. Okay, so that scope of work is the first and foremost activity which we have to do at the very beginning. So there, if I am a external auditor, internal auditor, so I may be involved if I'm a I have that kind of relationship with my client, that he makes the audit scope along with the auditor, ki what are the major areas in which we have to look upon. If your audit scope has been finalized, then if you have to kickstart an audit, so that time there is executional level planning which we have to do. Now wo executional level planning kya hoti hai, that what kind of resources we need, what is the time period which is involved, okay, what is the logistics arrangement that we have to do, then we have to work on the risk control matrix. So risk control matrix kya hota hai, because internal audit in nowadays is purely risk based internal audit, so we have to first, sitting in our office before going to the client place, we have to do a comprehensive groundwork with respect to that process. जैसा कि मेरे को प्रोडक्शन ऑडिट करना है, तो प्रोडक्शन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जियो पॉलिटिकल, टैक्सेशन, फाइनेंस, तो उसका क्या क्या ऐसा इम्पैक्ट है जो इसके बिजनेस पे आ सकता है. सो आई हैव टू डू माई ओन रिसर्च, मैंने रिस्क नोट डाउन करूंगा, then I have to do my own analysis that what are the possible internal controls जो कंपनी में होने चाहिए to mitigate those risks. Then we have to do what are the possible audit checks. तो पहले मैं एक comprehensive risk control matrix बनाऊंगा, टीम को ट्रेनिंग दूंगा, टीम फिर अप्लाइंट किया जाएगी, फिर डेटा रिक्वायरमेंट होता है, इनिशियल किक ऑफ मीटिंग होती है where we sit with the client, we inform them that these are the major areas we have to look upon, these are the my major data which we have to work upon, these are my team members and all. So this is a kick off meeting. After kick off meeting there is a preliminary data requirement that we share with the client. वो डेटा आता है, फिर आप ऑडिट एग्जीक्यूशन करते हैं. ऑडिट एग्जीक्यूशन क्लाइंट प्लेस पे भी होता है और ऑफ क्लाइंट भी हो सकता है, दैट मीन्स सिटिंग फ्रॉम योर ओन ऑफिस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क. एग्जीक्यूशन होने के बाद में and during the execution also there is lot of two-way communication which happens. अब वो communication कैसा होगा, that say for example if internal auditor is doing an audit of production, मैं example दे रहा हूँ, production में there is a production in charge who is the ground level executive standing on the floor, so you have to be in touch with that person कि आप कैसे काम कर रहे हो, process समझना, उसका data लेना, उसके काम करना. If you find an audit observation, then you have to discuss with your client. Client is what, auditee, then उसके HOD से, then management से, then you have to make a report, audit report. Formally you issue a draft audit report, seek their response कि this is my audit observation, this is a risk, this is my recommendation. I mean, what is your view? तो client अपना view बताता है कि either he will accept it or he will reject it. Okay, if he'll accept it then he will give their action plan कि हाँ I accept your recommendation, ये मेरा action plan है, ये मेरी timeline है. If he rejects then he will give a counter. क्या काउंटर करेगा कि या तो आपका डेटा खराब है, आपने डेटा गलत दिया है, आपने अंडर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग गलत है, सो वी हैव टू अगेन रीकाउंटर टू देयर काउंटर. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर बैठा है और दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कि ऑडिटर बोल रहा है कि मेरा तो सर ये है और मैनेजमेंट इज आर्ग्यूइंग कि नहीं आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है. सो वी शुड नॉट, टू अवॉइड दैट सिचुएशन, वी शुड हैव दैट बाइंड ऑन आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशन विद द ऑडिटी. वंस वी हैव दैट, then we prepare a final audit report, we present to the client. उसमें फिर final audit report में there are some timelines किस चीज़ की, to implement the action plan. कि audit में गलती मिली, आपने recommendation दिया, client ने उसको accept किया और action plan बताया,
और क्लाइंट ने बोला कि yes I accept it and after 2 months I will implement it. So then last leg of entire internal audit activity comes as a follow up audit. Follow up means कि आपने जो recommendation दी थी, client ने जो agree करा था, whether they have implemented that thing or not. So it's a follow up audit. So it starts with planning, then initial meeting, then data requirement, then execution, then continuous communication, then draft report, then final report, and follow. These are the steps. ओके सर, आपने बोला इतने सारे स्टेप्स हैं इसमें, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, ये तो आपने पूरी कि हमें इस तरह से ऑडिट को आगे तक कंटिन्यू करना है, ये आपका इनिशियल प्लान था पूरा, ये सारे मेरे स्टेप्स रहेंगे। बट इट ऑलवेज नॉट हैपन्स कि हमने जो प्लान किया एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से हो। देयर ऑलवेज सम पॉइंट्स ऑफ कि यार हमने जो प्लान किया था वैसे नहीं हो पा रहा, हमने डेटा मांगा, डेटा नहीं आ रहा है, हम उनसे रिस्पॉन्स चाहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो इन दोज केसेस मतलब व्हाट आर दोज पॉइंट्स की जहाँ पे इंटरनल ऑडिट में आप कह सकते हो कि पिटफॉल्स हैं जो इंटरनल ऑडिट को डीरेल करते हैं, डिले करते हैं। सो हाउ टू डील विद दोज ऑल पिटफॉल्स? Okay, so very well question. So internal auditor is a unwanted guest in any company. कभी हुए ऐसा होता है कि पानी भी नहीं पूछते, चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछते, गर्मी में वो विदाउट एसी के रूम में बिठा देते हैं, बैठिए सर हम आ रहे हैं, और 2 घंटे आप वेट करते हैं, पसीना बाहर आ रहा हो, वेट कर रहे हैं कि कोई तो आके हमें बचा लो। तो इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी ऐसे स्टार्ट होती है। सो दिस इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज दैट यू वोंट बी इन वेलकम्ड इन एनी कंपनी. So we have to be mentally prepared for it. Okay. So behavioral issue, that is we call as behavioral issue from the auditee. That is the first and foremost challenge that we face. Okay. Because आप किसी के यहाँ जाते हैं, आप उसको पता है कि आप उसकी गलती ढूंढेंगे और आप उसके मालिक को बताएंगे कि आपका ये आदमी गलती कर, तो वो क्यों आपको सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा. तो दिस इज बिहेवियरल चैलेंज दैट वी हैव टू फेस. तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू बी फिजिकली टफ, वी हैव टू मेंटली टफ. कि चाहे कितना भी पसीना आ जाए पर मुझे आज यहाँ से नहीं भागना, मुझे चाहे कितना ही वो हार्श या रूड बोलते पर मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना. यू गेटिंग? सो दिस इज फर्स्ट ना. सेकंड, डेटा. ओके, वो डेटा नहीं देगा आपको टाइम पे. ओके, इसके पहले एक आता है स्कोप लिमिटेशन. सो दैट मेनी टाइम्स स्कोप लिमिटेशन बिकम्स द a limitation for an internal audit because your hands are tied by the by that scope only. कि आपके पास जो स्कोप है आप उसी में काम करेंगे, आप स्कोप के बियॉन्ड नहीं जा सकते. सो स्कोप लिमिटेशन बिकम्स, जैसे मैंने आपको CFO का एग्जांपल दिया था. इफ यू हैव दैट इंडिपेंडेंट चैलेंज and you know that there is something which is not happening right in that particular company, but your hands are handcuffed because of that scope of work or engagement letter, so you can't go beyond that. So that is one thing, that data आपको टाइम पे नहीं मिलता. क्लाइंट्स आपको in a common language we call it कि आपको क्लाइंट इतना रुलाएगा डेटा के लिए कि आपके आंसू आ जाएगी. But then only we have to we have to come out with that situation. We have to ensure that proper mechanism is in place with respect to escalation. So there is an escalation hierarchy that we also agree with our client at the very beginning. If the data is not provided on time, so we have to report it to the senior authority in the client side also. Then data comes, we do some working. Now many a times there is a limitation with respect to the technology that is being used by that client also. Say for example, I'll give an example that many years back we did an internal audit of a car manufacturing company. The car manufacturing company gives in a public domain, they tell everyone that in every 2 minutes we produce one car, in every 2 minutes. But there was no software available to prove that. There was no data available to prove that. And जो मैंने आपको भी चैलेंज बताया, behavioral issue, data था and all that challenges were there with us. Okay, so हमें ना डेटा मिल रहा था, हम और we were doing a production audit. हमारा एक मन में ये बात थी दिमाग में कि क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा, हमसे प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा, और क्लाइंट की जहाँ जाते हैं वहाँ हमेशा इन इवन द एडवर्टीजमेंट्स आल्सो देते हो कि in 2 minutes we produce one car. So we have to prove that wrong. So what we did, we actually stood on the shop floor, टाइमर्स लेके हम खड़े हुए और हमने एक्चुअल मेजरमेंट करा, और हमने ये पाया कि 2 मिनट में गाड़ी नहीं बन रही थी, और उनके कुछ रीजंस थे, क्योंकि उनका जो कन्वेयर बेल्ट थी उसकी स्पीड चेंज हो रही थी, तो उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई डेटा नहीं था. सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर अस कि टेक्नोलॉजी लिमिटेशन. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो, कि आपको या तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑडिट चेक अपनाना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा, या यू हैव टू डिस्कस विद द टॉप मैनेजमेंट दैट वी आर सीइंग समथिंग विच इज
fishy and we have to go deep into that. So that time only the management who's appointing you will cooperate, and they will arrange some alternative arrangements. So technology, one thing. Then sometimes the knowledge or the upgradation of the team of the internal audit will also be a limitation. You have appointed some team member who doesn't know how to use SAP. Okay, and SAP is the ERP which is implemented at the time. Then your audit may not be that efficient. So we have to be ensure that our team is properly trained with respect to that ERP technologies and also all these things. Then accepting the audit observation, which is again kind of a behavioral thing, that is also a limitation which we have to come out with. ओके सर। सर मैं ये आपकी जो हमने बात करी भी पिटफॉल्स की, उसमें एक एडिशनल पॉइंट कि कभी आपने फेस किया एनी कन्फ्यूजन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो? तो अगर आपने फेस किया तो प्लीज़ एक बार बताइएगा, एंड हाउ डिड यू केम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एज वेल? ओके, सो देखिए मैनेजमेंट के साथ तो नहीं होता, बिकॉज मैनेजमेंट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी बेसिकली. बट येस, विथ CFO, with people sitting at that level wherein जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं उनके साथ जरूर लेता है. जस्ट बिलो द मैनेजमेंट. हाँ, so there is one appointing authority, audit committee और से board of directors. So since they are appointing us, so if you are reporting to them, वहाँ से नहीं होता. But there is a CFO और there is head of production, head of HR जिनका हम audit कर रहे हैं, उनके साथ होता है. Real life example, few months back we were doing some audit of HR function. There we found that few of the people were continuously coming late, okay, and going early, but in spite of that unka no deduction and nothing was happening. Okay, so there was a list of there was about I think 2500 employee company. So हमने पूरा data review करा, उसमें कोई 60 odd employees ऐसा data है. 7 employees were there which were for finance department, including the senior most person from the finance also. हमारे पास कॉल आया, मेरे ब्रदर हमारी टीम के पास कॉल आया, टीम मेंबर्स के पास में, दैट प्लीज रिमूव दिस नेम्स. तो टीम मेंबर वेरी पोलाइटली सेड ओके सर, आई विल सी, बिकॉज द कॉल वाज फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, नाउ in that company there was a problem independence because there was no internal audit department. So we have to report it to the finance team only, and they take our audit observation to the management. Okay, so that time my the team member politely told, okay sir, I will look into it and I will get back. Then he consulted to me that sir, this is the thing. So I politely said no, we can't do that. Okay, now after 1 month we published our final report, and in the final report their names were there. So the CFO got the frustrated ki what is this, in spite of our repeated request you have not removed this name on all these and all that. Then the call came to me. Then I politely said, sir, we definitely can't do it because of so many of the reasons, and if you want that we should remove, I completely agree to your point, just please give all these things in writing on the email to me. Okay. And he actually disconnected the phone. Okay. So that was a challenge, like how to deal with such situations. You have to be polite because you cannot argue, but at the same time you have to be you have to do the justice to your position also. Yes. Because that person may be furious with you that particular moment of time, but that person may give you respect if he will be out of that situation after some time, because he also understands that what is the role of an internal auditor, how better we are performing, and how confidently we are putting up our things in front of management. Okay. Sir, before we wind up, my last question to you is, you mentioned in your conversation कि हमें ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑफिस में बैठ के पूरी प्लानिंग करनी होती है कि इनके क्या क्या रिस्क है. अब उसमें कंप्लायंस रिस्क भी हो सकता है. अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें GST के बारे में पता है, TDS के बारे में पता है, लेबर लॉज के बारे में भी पता है, लेकिन उसके अलावा भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी होते हैं. रेरा हो गया, ड्रग्स एक्ट हो गया, फॉर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल स्पेसिफिक लॉज हो गए. सो बीइंग अ CA हमें सारे लॉज के बारे में तो पता नहीं हो सकता, वो हमारे करिकुलम में भी नहीं होता. सो बिफोर स्टार्टिंग अ ऑडिट जो कि डाइवर्स इंडस्ट्रीज की हैं, आपके पास आपके पास डाइवर्स इंडस्ट्रीज के एंगेजमेंट्स होंगे. सो आप बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट आप किस तरह प्लानिंग करते हो? आपको तो पहले या तो पूरा लॉ पढ़ना पड़ता है. हाउ यू मैनेज दोज थिंग्स एंड हाउ यू प्रिपेयर योर टीम एज वेल, बिकॉज आपको नॉलेज हो गई, दैट नॉट सफिशिएंट. योर टीम ऑल्सो शुड हैव दैट नॉलेज टू परफॉर्म द ऑडिट. Right. So that is again a valid question, and definitely that's a challenge as a chartered accountant, that management expects that you know everything. Okay, but you
actually don't know everything. So मैं every time I discuss with बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स also कि जैसे सीए बनते हो तो अगले दिन से आपके पास पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, मम्मी पापा एंड एवरीथिंग, दे आस्क ऑल टाइम काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस कि गोल्ड की रेट इतनी बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट सिल्वर पे क्या होगा. सीए बोलता है बच्चा बेचा कि पापा मेरा एक हफ्ते पहले रिजल्ट आया, हाउ विल आई नो इट. Okay, but no one understand that because everyone expect that you should know that. So, but इसमें ना एक कैच है कि कोई सा भी लॉ जो होता है उसका डीएनए जो होता है वो सेम होता है. आप ये समझना that there is a registration which is required under a law. Okay, there are some compliances with respect to reporting to the government authority that we have to do, and there are some procedural thing that we have to do. So it is only research in that methodical manner that we have to do. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रग्स का एक्ट दिया. ओके, सो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी. फार्मास्यूटिकल में so we as an internal auditor or as a risk consultant per se, I'm saying that we have to be vigilant that if you are doing certain business, so you have to do certain registration under certain act. Now what are that certain registration and certain act? That is the only research that we can do. So it's a target research that a person can do before an audit. So what is the registration is required to open a pharmaceutical factory? So they on the Google you can do some reading, you can download something. You don't have to read the entire law, but at least you will get some basic knowledge. This is with respect to registrations. Okay, then if you have to conduct certain thing, now there's a common IQ that you have to apply, that any new medicine cannot go into the market without proper testing. So it's a very normal IQ that we can apply. So you have to research in that manner that if you what are the testing that we have to do. Is there any report that or records that we have to maintain with respect to any new medicine? Do we have to file that records to any government authority? Is there any testing that we have to conduct internally or externally? So these are some target based research that we can again do. So based on that we get some data. So you don't have to download that PDF. You don't have to make it comprehensive Excel file, but a basic knowledge about that subject we can do in that manner. Okay. So I am on these questions only with you, and I really hope कि आपको सुनने के बाद हमारे listeners को एक eye-opening clarity मिली होगी regarding the risk consulting and the difference of risk consulting and internal audit. And I'm really glad to have you here. I really want to show my gratitude to you so that you spare some time from your busy schedule and came here to have a conversation with me. Thank you so much, sir, for being here. Pleasure all mine, Nandi. And I'm sure that this conversation will be fruitful and helpful for all of your listeners. And I'm sure you will also apply some risk consulting in your entire, day-to-day activities also, because that is the need of the hour. Thank you so much. दिल भी नहीं थी सर आपको सुनने के बाद आई रियली फील कि मुझे भी कहीं जगह चेक्स लगाने की बहुत ज़रूरत है इन योर माई डेली लाइफ एज वेल. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you so much for tuning in. If you find this episode insightful, make sure to like, share and subscribe the Tax Table with CN Anni. जल्दी मिलते हैं in the next episode. Till then, stay tuned. Here, this is CN Anni Gupta signing off.